Good afternoon, students. Good afternoon. I'm your teacher, Hemlata Ma'am, and I am today going to explain you class 12th biology chapter 6. It is the revision class because we have already made many videos of this chapter. And now with this video, we are going to understand and revise our concepts of this chapter. The chapter is molecular basis of inheritance. And you know that the molecular basis of inheritance is which molecule? DNA. DNA is the molecule which is the basis of our inheritance. And we inherited it from our father and the mother. And so to know about the DNA is our work. We will be understanding about it through a PowerPoint presentation. The slide is shared to you. The slide is shared. The DNA, about the DNA. So nucleic acids. Nucleic acids, what about the nucleic acid? Nucleic acids are the macromolecule present in all the living cells. So nucleic acids are hereditary material, genetic material, we say that they are present in all the living cells. Where are they present? They are present in the nucleus. Therefore, they are called nucleic acid. And most common genetic material and nucleic acid is the DNA. And in some retroviruses, we have RNA as a nucleic acid. They have RNA as the genetic material. Now, the next point which we are looking at is the definition of nucleic acid or the DNA is that it is a long polymer. You know that nucleic acid DNA is a long polymer of nucleotides. And what is a nucleotide? This is a monomer. Nucleotide is the monomer of the DNA. It is made of three subunits, which is the deoxyribose sugar, nitrogen bases, and the phosphoric acid. Like we say that adenosine triphosphate, guanosine triphosphate. These are what nucleotides. When they may make bond with each other, and the long chain of this adenosine triphosphate, ATP, GTP, TTP, and CTP, these makes the DNA polymer. Deoxyribonucleic acid DNA is the genetic material of all the living organism. This carries the coded information from one generation to the another generation, and it is a long polymer of deoxyribonucleotides. So deoxyribonucleic acid, DNA, the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है वन जनरेशन टू अनदर लॉन्ग पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का. इसके कंपोनेंट मैंने आपको जैसे बताया डीऑक्सीराइबोस शुगर है. इट इज अ पेंटोज शुगर एमिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4. स्ट्रक्चर आप देख सकते हो डीऑक्सीराइबोस शुगर का कि इस पे 2' पोजीशन पे OH नहीं है, सिर्फ H है. तो इस वजह से ही इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं. ये फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप है. एंड तीसरी चीज जो इसमें होती है वो होती है नाइट्रोजन बेस. फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4. These are the components which are in the nucleotide, make a nucleotide. Nitrogen bases are the third component, important component, and there are two types, purines and pyrimidines are the two nucleic acids. Nitrogen bases. Purines are the double ring heterocyclic structural component. The two types of the purines
present in the DNA are adenine and guanine. So they are double membrane. You can see the structure which is given below. These are this is the adenine, this is the guanine. So these are two purines. Now we move to pyrimidines, which pyrimidines are the single ring structure. These are single ring structure. Nucleotides, how it is formed? The compounds formed by the combination of phosphate group with the nucleoside. It's called nucleotide. Nucleotide कैसे बना? जब एक सेंटर में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर, उसके फर्स्ट कार्बन पे तो नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस हेट्रोसाइक्लिक जुड़ गया यहाँ पर आकर, लाइक एडेनिन जुड़ गया, एंड यहाँ पर जब जब उसमें 5' पोजीशन पे फॉस्फोरस ग्रुप और जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. आगे उसका डायग्राम दिया होगा, we will see. And the 4 type of nucleotides. So we were talking about the 4 type of nucleotides. The 4 nucleic acids nucleotides are deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, deoxycytidine monophosphate, thymidine monophosphate, adenine plus deoxyribose, adenosine, guanine plus deoxyribose sugar, deoxyguanosine, cytosine plus deoxyribose sugar, deoxycytidine. अब इनमें जब हम मोनोफॉस्फेट और जोड़ देंगे तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे. अभी ये न्यूक्लियोसाइड्स है, डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सीगुआनोसिन, साइटिडीन एंड थाइमिडीन. और जिनमें हम मोनोफॉस्फेट जोड़ देते हैं तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है. तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. यहाँ पर देख रहे हो न्यूक्लियोसाइड है, पर अभी फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा, पर 5th पोजीशन पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाएगा इस 5th CH2OH पे, जब फॉस्फोरिक ग्रुप और जुड़ जाता है, मोनोफॉस्फेट जब ये हो जाता है, तब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमराइजेशन से DNA बनता है. वॉटसन एंड क्रिक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोनों ने मिलकर DNA का मॉडल बनाया. नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला अपने DNA के मॉडल के लिए. DNA is double stranded polynucleotide sugar phosphate form the backbone and the bases are projected inside. The two strands are coiled to each other in anti-parallel. That is, one strand is from 5' to 3' end and the second is from 3' to 5' direction. Two strand DNA के common diameter 20 angstrom रखते हैं. एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करेगा. और एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, गुआनिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अरेंजमेंट, वन स्ट्रैंड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर पता हो तो दूसरे स्ट्रैंड का आराम से निकाल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया एग्जांपल, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें 5' to 3' दिया है और उसका अपोजिट हमने निकाला है. ए से हमने सामने टी पेयर करेगा, जी से सी, सी से जी, टी से ए एंड ए से टी पेयर करता है, सी से जी पेयर करता है, एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. तो हमें कभी भी अगर एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बता दे तो हम दूसरा निकाल सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ट्विस्ट होता है एक दूसरे से डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम पे. ईच ट्विस्ट ऑफ DNA में जब एक टर्न लेता है DNA तो उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं. डिस्टेंस इन 2 बेस पेयर्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है. ये डायग्राम दे रखा है DNA का और यहाँ बॉन्डिंग दिखा रखी है. एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर बता रखा है कि दोनों स्ट्रैंड बैकबोन की तरह काम करते हैं. बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर स्टेप्स की तरह, यहाँ पर लैडर की जैसे स्टेप्स होती हैं वो लगी रहती है दोनों बैकबोन को जोड़ते हुए. बट ये स्ट्रेट ना होकर कैसी स्पाइरल स्टेयरकेस टाइप लगेगी जिसमें ट्विस्ट हो रहे होंगे. राइट हैंडेड फैशन में ये रहेगा DNA. शुगर फॉस्फेट बैकबोन आप देख रहे हो, नाइट्रोजन बेस देख रहे हो सेंटर में, एंड 2 नैनोमीटर इसका आप डायमीटर देख रहे हो, 0.3 नैनोमीटर 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हो. TA बेस पेयर जो है और CG बेस पेयर जो है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर मेजर किया है 0.34 नैनोमीटर, एंड 3.4 नैनोमीटर इज द पिच ऑफ द वन टर्न. वन टर्न में
10 bases करीब होते हैं. This is the diagram. One way flow of genetic information from DNA to RNA to protein is called central dogma. DNA से RNA बनेगा, that is transcription. RNA से protein बनेगा, translation. इसको central dogma कहा जाता है. Packaging of DNA in prokaryotes. Prokaryotes में कोई definite nucleus ना होने की वजह से DNA फिर भी scattered नहीं, पूरे सेल में नहीं फैला होता. It is in the central region. सेंट्रल रीजन जिसमें डीएनए होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. The DNA in the nucleoid is arranged in the loops and the proteins. In eukaryote, DNA is stabilized with the positively charged basic proteins called histones. आप देख रहे हो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ऑरेंज कलर के दिखा रखे हैं, एक में ग्रे कलर के दिखा रखे डायग्राम में, और ये 8 होते हैं क्योंकि ये ऑक्टामर है हिस्टोन का. 4 टाइप्स के हिस्टोन इंटरनल में ऑक्टामर टाइप से अरेंज रहते हैं और एक हिस्टोन ग्रीन कलर का बाहर लॉक लिंकर की तरह ऐड करता है और इसके ऊपर एक टर्न लेता है डीएनए 1 and 3/4 टर्न और फिर वो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कहलाता है. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. Histone are organized to form a unit of length 8 molecule per octamer. Now the search of genetic material is topic is given. R strain bacteria of Streptococcus pneumonia. The Frederick Griffith was doing experiment by these, and he has taken 2 strains, R strains which are non-pathogenic and S strains which are pathogenic. Smooth strain, that means they are capsulated bacteria. So R strain, when it is injected into the bacteria, is not able to cause the disease, pneumonia. But the S strain, it's due to the it is smooth strain due to capsule presence. It is not detected by the immune system cells of the mice and it dies. Biochemical nature or something which is able to transform the R strain bacteria to S strain due to the transfer of genetic material. When he injected the mice with the mixture of heat-killed S and live R, then the R strain has changed into the S strain. This is the supercoiling of the protein, stone protein associated, that how a chromosome is formed by again and again supercoiling the nucleosome bead-on string in the curve and by supercoiling itself. Negatively charged DNA is wrapped around the positively charged stone octamer to form a nucleosome. Nucleosome seen as a bead-on string. Nucleosome forms a repeating unique structure in called nucleus called chromatin. Chromatin is packed to form chromosome by condensation at metaphase stage to form chromosome. Euchromatin in the nucleus is some loose coiled regions of chromatin and light stained is called euchromatin. तो क्रोमेटिन एक ऐसा थ्रेड है जो कि पैक हुआ है बाय द न्यूक्लियोसोम, इसके कॉइलिंग से बना है, वो क्रोमेटिन है. कंडेंस्ड होगा और ज्यादा अगर क्रोमेटिन तो क्रोमोसोम बनाता है. तो क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन है जो यूक्रोमेटिन रीजन है जहां पर कम वी कैन से सुपर कॉइलिंग देखी जाती है. लाइट स्टेन ये लेते हैं और कॉइलिंग लूज रहती है, तो ताकि यहाँ पर एंजाइम्स ज्यादा एक्ट कर सके और यहाँ पर प्रोटीन्स आरएनए बन सके, डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस हो. हेट्रोक्रोमेटिन वहीं पे न्यूक्लियस में मोर डेंसली पैक्ड रीजन है जो कि डार्क स्टेन लेते हैं. हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है देन द हेट्रोक्रोमेटिन. Transforming principle of Frederick Griffith concluded that the experiment took transformation. He conducted an experiment on the mice, pneumonia bacteria, Streptococcus pneumonia. These bacteria found in 2 strain, R strain, non-virulent rough strain, and virulent as smooth strain. S strain bacteria produce capsule. R strain or S strain, R strain non-pathogenic and S strain pathogenic is there. So with this, we have discussed the structure of the DNA and the packing of the DNA. And afterwards, we have discussed the search of the genetic material in that the first experiment. So this is for today revision, and I will revise the next topic in the next video. So thank you all for patiently listening, and I hope you like the video and you share and subscribe this video with all those who need to study conceptually the biology.